Indian Economic Service Aspirants, are you ready? Pen or paper हाथ में ले लिया है ना? So let us begin. Today we are kickstarting the 5-day demo of EcoNiti's 10-month answer writing program, specifically designed for Indian Economic Service aspirants who are targeting the June 2027 attempt seriously. I'm Komal and let's start. Today's video is going to be divided into 4 parts. In the first part, part 1, I will briefly review of what this answer writing program is. We have already put a very detailed video just this Saturday and a couple of days ago, and you can check that out. I will put the link in the description. Today I will just go over it briefly कि इस प्रोग्राम में क्या है और हम कौन से 4 पिलर्स पे काम करेंगे. I will also talk about what this 5-week demo is going to comprise of. हर दिन क्या होगा? So what the exact plan is on every day. In the part 2 of this video, then we are going to talk about the first pillar, which is the self-assessment form. I will share the form. So I will share the link to the brochure also, which is going to be there in the description of this entire program. And we will also put a link to the form that you can start filling. This is going to be the second part of the video. ये जो detailed self-assessment form है, we will go through it step by step. Once you submit that form, I will tell you what all will happen. Basically, the day 2 and day 3 will get started for you. Then in the third part of this video, we are actually going to do what we will do in every cycle. So हम topics उठाएंगे और उनको revise करेंगे. Of course, given कि this is not an actual session, I'm not going to revise a specific topic in full length. In fact, I'll try and give you a taste of some things from each paper. So IES में 4 economics के papers होते हैं, right? So GE 1, 2, 3, 4. I've just picked out a few important topics, जो top के topics हैं, top 1-2 मैंने उठाए हैं out of all these 4 papers, and we are going to briefly discuss about them. And then in part 4 of today's video, we are going to see the overview of the PYQs that are asked from these specific topics across these 4 papers. All right, this is going to give you a flavor कि ये 5 दिन में पहले तो क्या होगा, and a flavor of how the answer writing program is going to go over for the entire August to June period, which will land you into the June 2027 attempt. I will tell you all about this in a lot of detail. So let us get started. So the first thing that we are going to do is we are going to talk about a brief overview of what the program is going to be like and what the 5-day session is going to be like. So let me just share the screen for that. All right, I hope you can see my screen. Now, let me just give you a brief overview of this entire 10-month long program. As I said, this is going to be from August till June, where your exam will actually be in the mid of June, in the second half of June, around that time. Now, we are going to begin on the 1st of August, which is this Saturday. And we will keep this students who are trying to enroll, we'll keep the enrollment open for a larger part of August. Okay. Now, this entire program is basically designed around 9-day cycles. In those 9 days, we are going to pick a topic and we're going to follow the same routine for all those topics. So basically, there are going to be 4 pillars as we discussed in the last video. The first pillar of this entire program is going to be the self-assessment form. Self-assessment where you will start and you're going to come back to the self-assessment every month or so. In the self-assessment, which I will just show you, we are going to, and you are going to, for yourself as well, evaluate yourself on very detailed criteria. And each of these criterion is actually what an ideal answer requires you to have. So an ideal answer or an ideal answer sheet or an ideal aspirant. By ideal, I mean an aspirant who will be able to qualify and get an interview call. ठीक है, so उसके बारे में हम बात करेंगे. That is pillar number 1. Pillar number 2 is going to be your keywords and untimed answer writing. So हम क्या करेंगे हर 9-day cycle में, as you can see over here, we are going to talk about a particular topic जिसका calendar will already be set for you. We already showed you the calendar as well.
Every 9-day cycle, the first day will be what the topic is, brief revision, how to revise, what all things to cover, as well as we'll just see that what kind of PYQ pattern is for this particular topic. That will be day one. Then the second, so this is self-assessment, the second pillar. Along with this is where we start. The second pillar will be where you recognize the keywords and write untimed answers, which is essentially going to lower your static friction. जो threshold शुरू करने में दिक्कत होती है, वो शुरू करने में किसी भी टॉपिक के लिए it will make it easier. Secondly, it will also make you note down all the keywords related to all the topics that are covered in this exam. Any nice answer, any good scoring answer requires that you use the correct keywords. So basically, this is going to fulfill two purposes for you. एक तो तुम्हें याद भी हो जाएगा, लिखने में शुरू करने में easy होगा, और दूसरा जब तुम्हें याद हो जाएगा तुम अपने आंसर में you can actually write those keywords. Untimed answer practice is again meant to serve two purposes. The first is that a lot of times when we start answer, हमको लगता है कि एग्जाम में तो इतना कम टाइम होगा तो हमको शुरू भी इतने कम टाइम में ही लिख के करना है. हम ये नहीं सोचते हैं कि हमको एक्चुअली वी नीड टू डेवलप एन आंसर फॉर अ टॉपिक दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको हमने वक्त लगा के रिसोर्सेज यूज करके लिखा है. एंड देन when we practice in an untimed manner, then we can draw upon that as a resource itself. So this is going to be the second pillar. The third pillar is where you start taking tests from the first week itself. हाँ, अब बहुत पढ़ लिया, अब लिखने का वक्त है. जितना ये लिखना डिले करोगे उतना प्रॉब्लमेटिक है. So what we are going to push you for is that you have studied enough, you need to start writing. And of course, once you start writing, your answers will be bad. Most of the times they will be rubbish. We have to get past that phase. But you cannot get past that phase unless you go through that phase. है ना? तो आग का दरिया है, तैर के ही जाना है, उसके ऊपर से फ्लाइट लेके नहीं जा सकते हैं. तो वो फेज हमको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पार कर लेना है. ठीक है? That is the third pillar, that you're going to start with your test, as well as those tests will be evaluated by us. That means that you are going to start writing untimed answers by the first cycle itself. And then the fourth pillar is going to be the model answers. Model answers, of course, हर जगह हर कोई देता है. But the model answer, the timing of the model answer in this particular program is going to be when you have done the hard work yourself. ठीक है ना? तो शुरू करने से पहले ही हम चैट जीपीटी से आइडिया नहीं लेंगे. हम शुरू करेंगे, उसके बाद हम खुद अटेम्प्ट्स लेंगे, फेल करेंगे, एंड उसके बाद we will reach to a point where we will reduce the failures, finally coming to a point where we will almost eliminate the failures. So these are the four pillars on which this entire program is built. You can see them here. This is the first thing that we do. Self-assessment is going to be the first pillar. This is the second one, where you do keyword recognition and untimed open book writing. So ये सब मिला के हमारा दूसरा pillar बनता है. Timed writing is the third thing, and model answers and feedback is the fourth thing, right? बाकी ये सब हमारा काम है, ये हम करेंगे, तुमने वही चार काम करना. All right. Every month you're going to go back and you're going to take the evaluation, self-evaluation. You're going to fill that form again, and we will show you the progress, how you're progressing, and you will also see for it yourself. ठीक है? All right. So now let me show you कि ये तो हो गया. अब हम इस 5 day में क्या करेंगे? How these 5 days are going to look like. So let's just cover that and then get started with the day 1 assignment. है ना? So day 1 पे हम self assessment करेंगे, which is what today will be about. So self assessment form I will show you in detail कि वो क्या है and उसमें किस type के questions हैं. I will also fill it in front of you, most of it. उसको भरने में time लगेगा, which you have to give. So कभी भी तुम अगर कुछ शुरू कर रहे हो और बिना information के शुरू कर रहे हो तो ऐसे अच्छा लगता है कि मतलब जितनी जल्दी शुरू कर दिया उतना अच्छा, लेकिन information के साथ शुरू करने में थोड़ा time लगता है, but you start right. Another thing it helps, अगर तुमको शुरू करने में तो you will always keep on pushing कि पहले पढ़ ही लेते हैं, पहले पढ़ ही लेते हैं, हमेशा ये attitude रहता है. Let me first finish the concepts. Let me first understand everything. When you will fill that answer writing form, you will see that कि answer लिखने भर में कितनी मेहनत, कितनी चीजों के requirement है. And
you will also know कि वो चीजें कौन सी हैं. So then it will also push you to start writing earlier than late. जितनी जल्दी हम आंसर लिखना शुरू करें उतना अच्छा. All right. So what will happen is today I will show you the answer, the self-evaluation form, and the link to that form will also be in the description. Now, if you are discovering us through some poster or some post here and there, I will put a link to that self-assessment form everywhere. ठीक है ना? तो जहां से भी you are discovering this program, you will find a link to the self-assessment form. The first thing that you should do is भले तुमने enroll करना है, नहीं करना, आंसर लिखना है, नहीं लिखना है, if you are serious about the 2027 attempt, you start by filling that form. वो फॉर्म तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें तो कुछ है नहीं ऐसा, वो फॉर्म प्लीज भरो. If nothing else, it will tell you कि क्या क्या चीजें टारगेट करनी है. All right. Now, once you fill the form and submit it, you will receive one email first of all, which is going to tell you कि what were your responses, right? So that you also have a record. When you enroll with us, this entire thing will be on the platform on Zaptic. ये सारी चीजें होंगी, so then you don't have to get the response and organize it yourself. वो सब हम करेंगे, but for the demo week, we have to do it via the Google form. So you will get your responses and you can make a note of it. The second thing is that you will receive an email with a set of practice questions which will be strictly PYQs. ठीक है? So हम जो topics cover करेंगे उसके basis पे I have just chosen 2 PYQs from जितना recent हो सके उतना. हाँ? So recent years के questions उन topics पे based PYQs I have chosen. I've created a set of those practice questions. They will be emailed to you. What you have to do is simply start writing. ठीक है ना? कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ना है पढ़ लो, वो तुमने untimed लिखना है. Right? So this is the second pillar where you're going to work. So once you receive the questions, every question, of course, तुम्हें टॉपिक याद नहीं है, जाके टॉपिक रिवाइज करो. बुक खोल के ही बैठ जाओ, बुक खोल के बैठ जाओ कि इसका आंसर लिखना है. जितने नंबर का है उसमें पता है कितने पेजेस का आंसर लिखना है, बुक खोल के बैठ जाओ. First thing you're going to do is you're going to write. This is your day 2, all right? Practice. So you will receive a set of practice PYQs over here. Then we move to day 2. Day 2 में तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, तुम अपना आंसर लिखोगे. सिर्फ वो 7-8 क्वेश्चन के आंसर्स लिखोगे. कैसे लिखोगे? First you will write the keywords. These are your second pillar, मतलब untimed तरीके से लिखना है, open resource, open book. So you have your notes, you have your books. हर टॉपिक के लिए तुमने keywords पहले उठाने. So just write those keywords at the top of the answer. Don't worry about including them in your answers right away. सबसे पहले keywords लिख दो. उसके बाद देखो कि भाई तुम्हारे पास अगर सारे resources हैं तो तुम इस particular question का आंसर कैसे लिखोगे and write that answer. ठीक है? सोचो कि मेरे पास सब रिसोर्स है, टाइम है, I will write that answer and you write the answer to those just 7-8 questions and then you send it to us. Right? Where do you send it? You email it to us on our email ID info@econiti.org. वो information भी हम मेल में आपको डाल के दे देंगे. वो email once we receive, then we will know कि हाँ you've practiced. So then once we receive that email, you will get the test emailed to you. Right? This is going to be day 3. So on the third day, you will receive a test and उस टेस्ट के ऊपर लिखा होगा कि कितने देर में फिनिश करना है. It will only have 4 questions because we are only going to cover 4 topics for now. So you will have to take that test in a timed manner. Now, यहाँ पे honesty will matter. Right now, because this is a demo week, तो हम आपको अभी onboard नहीं करा सकते अपने टेस्ट प्लेटफॉर्म पे, right? If you are enrolled, then all of you will get onboarded, which means that the test platform will time you, and once the time is over, then क्या नाम है, वो डिस्प्ले बंद हो जाएगा and you will have a 15-minute window to scan and submit. ठीक है ना? यहाँ पे हम ये नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे you have to do it honestly yourself. So honesty matters at 2 levels. First, जैसे क्वेश्चन पेपर मिला तो पहली चीज तो सिंपल है कि जब लिख रहे हो तो किताबें बंद, टाइम शुरू. सो इफ सपोज यू हैव say 30 minutes or 40 minutes to write those answers, you time yourself and you exactly stop writing when the timer hits 40. ठीक है? ये फर्स्ट लेवल ऑफ जो अवॉइड करना है, जो हमको लगता है कि हाँ ऑफ कोर्स हम देख के नहीं लिखेंगे और हम टाइम में लिखेंगे, दैट इज ऑनेस्टी.
The second layer of honesty is that जब you receive the email with the questions, you do not look at the questions and then you close it and then you think about it and then you write about it. Or you go back to your resources and then you write about it later. Question देखते ही लिखना शुरू करना है, which means that you receive the email, you set up your entire system जहां पे भी तुमने लिखना है, एंड फिर क्वेश्चन पेपर खोल के लिखना शुरू करो. उसको खोल के बंद करके दोबारा नहीं लिखना. उसका कोई मतलब नहीं है. इवन दो यू मे फील कि तुमने अपने मेमोरी से लिखा है, बट रिमेंबर इन द रियल एग्जाम सेटिंग you are not going to look at the question paper and then go back and revise, right? That revision time, that time that you're letting your mind sit on the questions, is actually cheating, because exam में देखते ही लिखना है and तुरंत memory से you have to absorb the shock, you have to absorb the time pressure, you have to absorb the idea that you never saw these questions before this, right? So the second honesty is actually more important, क्योंकि first तो हम सभी कर लेते हैं. Second ये है कि आप सेटअप करके बैठें और फिर खोल के अपना लिखना शुरू करें in the time manner. And once you are honest on both these levels, you scan it and then you again send it to us. ठीक है? This is where we will start evaluating your test, right? And then we will enter day 4. Again, you will see my face and I will discuss the 4 questions that the test questions that we gave. तो हम उसका पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में क्या क्या जाना चाहिए. मे बी इफ पॉसिबल, if there are possibility of writing the intro or the conclusion in multiple ways, we will discuss all of that. How exactly the content should be organized and what exactly should go into the content. Okay? This will be day 4 and we will take this time, you will submit over here, and this day we will take this time to evaluate your answer scripts, and we will take this time, of course we are already underway preparing the model answers. Then on day 5, and this is for now going to be Saturday 1st August, right? So on day 5 we are going to email you the model answers along with your evaluated scripts. And that is where our admissions will also start. So the batch will start. So we will keep the admissions open for some time, but these two are going to be basically happening on the same day, because due to some unavoidable reasons, I could not put this video up yesterday. So that is why things have been pushed a little, but that doesn't affect you in the least. Whenever we start, the admissions will be open for some time. So you can keep on enrolling, and but the schedule will keep on going. तो जो कि वो topics हैं वो चलते रहेंगे. If you come a little late, you will be missing on those topics. लेकिन जो भी currently चल रहा है, you can get straight away enrolled in that. And of course, you will get the model answers for the topics that have already been covered. So on day 5, I will then walk you through in more detail that how you need to enroll and क्या सारा process है वो मैं उस दिन समझाऊंगी. ठीक है ना? So yeah, so this is the idea, and this is the 5-day plan that we have. Anything else that I'm missing? No, right? So now let us move to the part 2 of this video where the demo actually starts, which is where day 1. So आज हम क्या करेंगे in this first day of the demo, we are going to do both these things. So we are going to Acha, this is the second thing, my bad. So we are going to do the self-assessment thing and the second thing, which is the topic kickoff. Okay, so usme, because you didn't have to do anything, I didn't put it here. That is going to happen in the first day itself, which is today. So let us get started with that. And let me change my screen sharing. All right. So now you must see the answer writing program ka student assessment form over here. And let me walk you through this. We're going to fill the form alongside. Now, this form is going to take your time. So please take out 15 minutes, 20 minutes so that you fill the answers without, मतलब अंधेरों की तरह नहीं fill करना, ध्यान से सोच के fill करना, ठीक है? This has 3 sections. The first section is basically the profile. So you have your name, email, mobile, right? Apart from that, you have to choose that what is your attempt number.
this is the right time to tell you who this answer writing program specifically is for. Now, there are various stages of an aspirant. This is a program for an aspirant who has finished most of the syllabus once. ठीक है, ये important है. And this finishing syllabus is not equivalent to doing a master's in economics. Even though on paper the syllabus is almost the same, है ना, जो भी मास्टर्स तक तुम्हें आता है वो सारा कुछ इसमें पूछा जाता है. लेकिन what you will realize once you start preparing, if you have done that, that the depth that is required, how you understand the answer, the breadth that is required, right? And the temperament that is required is very different from what you have done in college. So when I say that you have done almost the entire syllabus at least once, I mean that either you have done it yourself, specifically for IES, or you have taken classes somewhere, a course somewhere, जो भी तरीका है. लेकिन आपने पूरा सिलेबस एक बार पढ़ा. If you are, no matter what qualification you have, मास्टर्स हो चाहे जो भी हो, if you have not done that, then this program is not for you. Then you should start a live batch or a current batch जिसमें कि वो पढ़ा रहे हैं. ठीक है ना. ये उन लोगों के लिए है जो कि आइडियली एक बार ही सब कुछ पढ़ चुके हैं. एंड इट इज ऑल्सो डिजायरेबल अगर वो एक बार ही अटेम्प्ट दे चुके हैं, भले ही ट्रायल ही सही. ठीक है ना. लेकिन अटेम्प्ट इज नॉट बेसिकली अ प्री रिक्विजिट, इट इज एन एड ऑन. बट हैविंग डन द एंटायर सिलेबस, थोड़े मोड़े कभी मान लो एनवायरमेंट छूट गया या इंडस्ट्रियल छूट गया या क्वांट में पीसीए छूट गया, ये सब चीजें हो सकती हैं. या मान लो कि क्वांट में रिग्रेशन या टाइम सीरीज छूटा हुआ है, स्टिल अलाउड. बट नॉट लाइक दैट यू हैव नॉट डन 90% ऑफ द सिलेबस, राइट? सो यू, या 40% ऑफ द सिलेबस भी नहीं चलेगा. Given the 9-day cycle, there is time only for revision, क्योंकि आंसर भी लिखना है और आंसर ऐसा लिखना है कि अनटाइम भी हो और फिर टेस्ट भी हो. तो पढ़ते रहोगे तो उस टाइप की चीज के लिए नहीं. ठीक है ना. ऑल राइट. सो देन वी ऑल्सो आस्क के लाइक कौन सा अटेम्प्ट है ये. यूजुअली वी आर एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स हु आर ऑन देयर सेकेंड अटेम्प्ट or the first serious attempt, that kind of thing. But if you have taken any attempt, चाहे वो serious हो चाहे unserious हो, वो आप इसमें count करके लिखना. Second is that what are you doing right now? A lot of kids who have already done the syllabus one, they tend to be either working or doing something else. Some of them are also preparing full time. No, there's no judgment here. Full time prepare करने वाले भी होते हैं और part time prepare करने वाले भी होते हैं. Whatever you do, you are going to specify over here. The purpose of this question is twofold. पहली चीज तो ये हमको भी आपके बारे में information देगी, and maybe we will be able to customize things wherever possible. And secondly, it follows with this question that okay, that is in the next section. So we want to ask you, okay, how many hours in a day can you dedicate? And the aim is for you to also track कि given my job, मैं कितना time दे पा रही हूँ या दे पा रहा हूँ. And we want you to be able to maintain that time, right? So of course it will differ कि आप चाहे full time कर रहे हो या part time कर रहे हो उसके ऊपर. लेकिन you will still have a number that even if I'm doing part time, मेरे को इतना टाइम रिक्वायरमेंट है. मान लो कि 1 month डाउन द लाइन यू रियलाइज कि दिन में 3 घंटा देना इनफ नहीं है, राइट? सो देन you will know ना कि how much time you are giving. Then next time maybe you will try to push that a bit towards 4 maybe, right? That is the idea. Again we do ask that अगर उसके बाद भी कोई पूला बिसरा आ जाए, they don't understand the kind of rigor that this program will have, then of course we want to know that have you studied most of the syllabus at least once. We will not suggest students who have not done that to join this program. And of course we also want to know कि कितना time actual में dedicatedly दे सकते हो. तो क्या कोई और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, if possible, if you're also going for a mentorship along with this, then maybe I can customize the plan accordingly for you. All right, so let me just fill this out and then we will move to the next page because we cannot do that till I fill this out. All right, so just give me 1 second.
All right. So let me say that this is my second attempt. My current status is a working professional. Have I appeared for this or similar exam before? Yes. All right. Have you studied most of the syllabus? Yes. And are you preparing for any other exam? Suppose I say no. Then we move to the next section. Now, this next section is about ranking yourself on each of these broad subjects that we have, right? So we have microeconomics. Suppose I say I'm a 4, macro mein I'm a 3, money and financial markets, maybe I don't know much of it. Public mein I'm a 4, international is strong. Suppose growth is strong. Environment is a 4, stats is strong, math maybe weak, and Indian economy is a 4. All right. Now, this is for yourself, but it will also tell you कि progress कैसा हो रहा है. Now, this is the section that is going to take the most of your time, and you should give it good amount of time to fill it out. All right. Look at the questions. I've already talked about these questions, but फिर भी हम इसमें करते हैं. First question, my notes are organized around the syllabus and they are not scattered across sources. तो कई बार हम जब notes बनाते हैं तो हमको नहीं आइडिया रहता है कि ये notes कितने ज़्यादा valuable होने वाले हैं. So although I do try to push at least my students to make notes that ultimately become the resource that you go for rather than going for the source material. कि लेक्चर हो गया, लेक्चर के एक्चुअल मतलब लेक्चर की पूरी रिकॉर्डिंग हो गई या बुक पढ़ना पड़े, वैसे नहीं करना है. पहली बारी नोट्स ऐसे बनाओ कि वो पक्के हो जाए और उसी से रिवीजन और उसी से सारा कुछ वापस से पढ़ाई हो जाए. इफ यू हैव डन दैट, very good. Otherwise, you will have to do it along all of this, right? So then you will know कि धीरे धीरे तो my notes organize हो रहे हैं. So suppose I'm at a state that my notes are not organized, right? So all of this will start on a scale of never to always. Never would basically mean that for none of the subjects my notes are organized, and 5 would mean that सारे subjects का या most of the subjects का मेरा notes अच्छे से organized है, फैले हुए नहीं है और irrelevant चीजें नहीं है उनमें और relevant चीजें missing नहीं है. ठीक. Then second question, you will have these kinds of questions. I can identify exactly what a question is asking before I start writing. So not like your Michael from Office that you start a sentence and you don't know where it ends. I hope you Gen Zs get this reference. But anyways, so you should know कि इस question में exactly क्या पूछा जा रहा है, and by that क्या पूछा जा रहा है, I don't mean like कि अगर you see a question on Hecksher Ohlin model and you start just writing about Hecksher Ohlin model. You know कि question में क्या पूछा गया है from the topic, उसका तुम्हें कंटेंट पता हो और किस एंगल से पूछा जा रहा है वो भी पता हो, राइट? सो हेक्सर ओलिन मॉडल के बहुत फेसेट्स होते हैं, उसके किस बारे में पूछा जा रहा है, डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो सपोज आई स्टार्ट विथ sometimes. Next question, my answers stay within the expected length without unnecessary padding. Now, स्कूल कॉलेज में हम ये अक्सर करते हैं, करना पड़ता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसमें कुछ भी लिखने लग जाते हैं. यहाँ पे वो कुछ भी, वो जेनेरिक सेंटेंसेस, वो फालतू की बातें, they will not be rewarded definitely. In fact, you will be penalized for that. इस प्रैक्टिस को हमने एलिमिनेट करना है. ठीक. That is why this question exists. Then I start my answer with an introduction, as I always tell you, intro, body, conclusion. So this specifically asks you कि भाई introduction लिखते हो कि नहीं. Maybe initially you will be on a 2, you will be on a 1, and then over time maybe you improve. Hopefully you improve, and by that time you reach the exam, you can choose always. Trickier, I include a conclusion in my answer. Intro तो बच्चे कर लेते हैं, conclude करने में काफी struggle करते हैं. So maybe you start with never and maybe you land up at 5 always in this course of 10 months. ठीक है? I include keywords in my answers. Again, maybe sometimes you do, most of the times you don't. I underline important words or phrases in my answer. Another very important thing to do, right? See, these are all the things that you should do in an answer. बट हम अक्सर ये चीजें या तो हमें पता नहीं होती है या तो हम भूल जाते हैं. बट जब हर महीने इस फॉर्म को देखोगे और ट्रैक करते रहोगे, देन यू विल नो कि क्या भूल रहे हो और क्या अगली बार ध्यान देना है और क्या अच्छा चल रहा है तो उसको मिस भी नहीं करना है. ठीक है? Then I include criticism or limitations in my answers, right? Wherever applicable, this has to be included. Conclusion में usually
do not end with a criticism, right? Most of these, if you have seen, you've seen what is it, aspirants, अगर देखा हो TVF वाला, right? या फिर इनफैक्ट एस्पिरेंट्स देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आंसर में पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करना या होलसम नोट पे कंक्लूड करना कितना जरूरी है, राइट? एंड ट्वेल्थ फेल हाँ, ट्वेल्थ फेल द विक्रांत मासी वाली मूवी, ट्वेल्थ फेल देखोगे तो पता चलेगा कि लिखने का इंपॉर्टेंस क्या है. So if you have not already seen these movies, then take a weekend, see them. So 12th fail में you will realize that this guy as usual was confident कि हमें आता है मुझे. Of course तुम्हें आता है, तुमने पढ़ाई की है, तुम्हें आता है. But once you sit down writing, तुम्हें कुछ नहीं आता है. तुम्हें अपने बारे में लिखना कहा जाए तभी भी तुम नहीं लिख पा रहे हो. So these two, apart from the entertainment that they provide, एक्चुअल इंसाइट्स देते हैं हमको कैसे पढ़ना है इस एग्जाम के लिए. सो वे फॉरवर्ड, पॉलिसी कंक्लूजन, यू हैव टू एंड ऑन अ होलसम नोट. डू यू डू दैट? नेक्स्ट क्वेश्चन. आई अवॉइड जेनरिक और फिलर सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, कोई थ्योरी आया, उसमें तुमने लिख दिया कि भाई यस दिस थ्योरी हैज इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंप्लीकेशंस, एंड देन यू एंड, राइट? ऑफ कोर्स फालतू थ्योरी नहीं होती है, सबके पॉलिसी कंक्लूजन्स, पॉलिसी कंसिडरेशंस, पॉलिसी इंप्लीकेशंस होते ही हैं. तो आपके ऐसे लिखने से किसी को कोई एक्स्ट्रा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, बस लोगों को ये पता चल गया कि आपको कंक्लूड करना नहीं आ रहा था. मत करो, बट ये मत लिखो, राइट? इनफैक्ट इट्स लाइक इक्विवेलेंट. Sometimes maybe not concluding is better rather than writing these filler sentences. So we have to also move this to the always direction, that you always avoid generic filler sentences. I can connect economic theory to current affairs. Now, this is something that is very important to write a sophisticated, nuanced answer. थ्योरी क्वेश्चन में रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाना और रियल वर्ल्ड वाले क्वेश्चन में किसी इकोनॉमिक थ्योरी से कनेक्ट कर पाना, ये एलीट बात है. हाँ, और ये मोस्टली बच्चे नहीं करते हैं और इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है. सो दीज टू क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली आस्किंग यू टू लाइक थिंक अबाउट इट, दैट यू डू इट, एंड इफ यू डोंट डू इट टू पुश यू कि अगली बार तुम्हारा स्कोर अगर 1 पे है तो 2 पे तो जाए. ठीक है? So you're connecting theory to current affairs, and then you are able to spot underlying theory in the real world events, right? Diagrams, very important. So are you including diagrams या miss कर देते हो उसको? Do you know कि diagrams में exactly कौन से variable कहाँ पे कौन से axis पे जाता है? I'm comfortable writing equations in my answers. Every time the aim is to move towards 5. The questions have been designed like that so that you always try to move towards 5. ये मत confuse हो कि कभी 5 पे जाना है कि कभी 1 पे जाना है. I include economic interpretation. Dry answers नहीं लिखने हैं, as I always say. कुछ लोग हैं जो कि इक्वेशन बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और फिर वो इंटरप्रेट करना भूल जाते हैं. कुछ लोग हैं जिनको इक्वेशन से डर लगता है, एंड देन दे आर लाइक दे राइट वेरी ब्यूटिफुली द इकोनॉमिक इंट्यूशन बट दे फॉरगेट टू इंक्लूड द इक्वेशन. गुड आंसर इज टू बी एबल टू इंक्लूड बोथ. सो दोनों चीजें होनी चाहिए. So you include economic interpretation. Again, you want to move towards always. I can differentiate between similar models or theories, right? For a nuanced answer writing. I can link different theories or views along a common theme. This is something that you will encounter again and again. कि बहुत बारी questions इस चीज को demand करते हैं, right? You will see this more detail, but this is another skill that is required in answer writing. I am comfortable with numericals. I'm comfortable with questions that ask me to compare models. So एक तो सिमिलर हो गया, तुम्हें एक कहीं तुमने पढ़ा, तुम्हें याद आया कि अच्छा ये मॉडल में भी ऐसा होता था, तो तुमने उनको मिला के साथ में यू ऑल्सो रेफरेंस्ड दैट मॉडल. दैट इज अबाउट सिमिलैरिटी, राइट? कहाँ गया? हाँ, अनदर इज दैट कैन यू कंपेयर डिफरेंट मॉडल्स. आर यू एबल टू सी कि भाई किन किन पॉइंट्स पे कंपेयर करना चाहिए, क्या अजम्पशंस पे कंपेयर करना चाहिए, एम्पिरिकल रिजल्ट पे कंपेयर करना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट पे कंपेयर करना चाहिए, all these kinds of things. I feel confident recalling data and recent figures for Indian economic questions. Now we are moving towards कि Indian economy में बच्चे क्या problems face करते हैं. One of the problems that they face is कि उनको data नहीं याद रहता है. ठीक है? So that gives them a lot of under confidence कि भाई इंडियन को आया नहीं कि मेरा तो आंसर वैसा रहेगा, उसमें कोई डेटा पॉइंट ही नहीं रहेगा, right? We also move on to move this from never to always.
कि नहीं याद आ रहा है तो हम उसको कैसे टैकल करें। ऑफ कोर्स इतना सारा डेटा पॉइंट नहीं याद रख सकते हो, राइट, बट देयर आर वेज टू एक्चुअली बी एबल टू रिमेंबर, एंड मोर इम्पोर्टेंट देन दैट एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स याद नहीं करने, बट तुम्हें उसका बॉल पार्क पता होना चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पिछले से, लाइक फ्रॉम द लास्ट टाइम द डेटा वाज कलेक्टेड एंड द फ्रेश डेटा, वो मूवमेंट अपवर्ड्स है कि डाउनवर्ड्स है। सो दिस यू शुड नो, इवन इफ यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट फिगर, दैट इज समथिंग दैट इज अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट। इफ यू कैन रिमेंबर, रट सकते हो तो अच्छी बात है। इफ यू कैन डू दैट फॉर a lot of data points, very well. For some, if you cannot do that, that's not an issue. But you should know the trend, you should know the ballpark. That is what we are going to aim for. Now, I feel confident and not anxious tackling Indian economic questions. So when I was in college, मेरे को Indian economic से बहुत डर लगता था, क्योंकि Indian economic कभी ढंग से पढ़ाई नहीं जाती है. So I would actually be over here because I never feel that. एम is कि यहाँ से यहाँ तक मैं पहुंचू, कि I don't feel anxious the moment I think about Indian economy, right? Sometimes this can also happen with the other theory questions. इसी के लिए मैंने शुरू में भी वो क्वेश्चन डाला है कि I know what is supposed to be written rather than panic में कुछ भी लिखने लग गए. Okay. Now, another thing that we want to instill is that I want you to use flowcharts and tables to make your to write your answer rather than prose like full sentences. ठीक है? I am able to complete answers within the stipulated time. क्वेश्चन पेपर पूरा लिखना बहुत जरूरी है, वो भी इसमें हमको अपने इनकलकेट करना है, लिख लिख के वहां तक पहुंचना है, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं. ठीक है? I do not panic or freeze when time is short. Very important skill. ये भी लिख लिख के ही आएगा, ये भी टाइम्ड टेस्ट दे दे के ही आएगा. I do not use shorthand in my answers. I always suggest against it. Shorthand नहीं लिखना है. शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम्स लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड नहीं लिखना है. ठीक. आई मेंटेन लेजिबल हैंड राइटिंग. रिमेंबर, जब अचानक से 2 घंटा बैठ के लिखने लग जाओगे तो राइटिंग तो गटर में चली ही जाएगी ना. कब नहीं जाएगी? जब तुम प्रैक्टिस करोगे. when you practice writing for long hours, for the entire 2 hours, 3 hours, then you will maintain the legibility of your handwriting. All right. If someone else read my answer, they would be able to follow the flow of my argument clearly. Very important कि ऐसा ना हो कि तुमने लिख तो सब दिया है बट उसमें कुछ आर्ग्यू करना था और जो पढ़ रहा है उसका सर गर्म हो जाए कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं. You have to again get to always over here. I can write continuously for 2 hours without significant fatigue, right? I attempt all parts of a multi-part question. कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन दिखा, ऊपर वाला कर लिया, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले गए. सी व्हाट दिस डज इज दैट यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड अ क्वेश्चन. उसमें तो तुमको एक ही आता था और अब तुम वो पूरा क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हो, बाकी क्वेश्चन तो हर क्वेश्चन का तो एक एक पार्ट कर नहीं सकते हो. जो क्वेश्चन को पकड़ा है उसको तो पूरा ही करना है ना, तो वो क्वेश्चन वेस्ट हो जाता है वहां पर. तो ये कर रहे हो क्या आप? अगेन यू हैव टू चेक, राइट. I use correct economic terminology and technical vocabulary, again important because this is an economic specific exam. तो ये तो करना है. Finally, I can construct a reasonable answer even on topics जो मेरे को डिटेल में नहीं पता है, which shows that of course किसी भी एग्जाम में तुम्हें सब कुछ नहीं आता होगा, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही. We will try to minimize that possibility. But something new may crop up, something that you did not prepare or could not prepare. बट इतनी ट्रेनिंग हो कि उसका आंसर भी रीजनेबल लिख पाओ. ऑलराइट, दिस इज द एंटायर फॉर्म. इट विल टेक टाइम, प्लीज फिल इट ऑनेस्टली and then you submit, right? Once you submit, I'm not going to do that. All right, so once you submit, then immediately you will get the responses, and within an hour or so we will email you the practice questions. ठीक है? All right, so that is the first part. Now let us move to the second part of जो हम सेल्फ असेसमेंट के बाद करते हैं, वो होगा टॉपिक किक ऑफ. So let me change my screen share and then we will get started with that. All right,
सो नाउ वी आर गोइंग टू डू दी टॉपिक किक ऑफ, जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा के उसका रिविजन करेंगे. नाउ ऑफ कोर्स दैट कैन नॉट बी डन ऑलरेडी. आई थिंक हाफ एन आवर हैज का वीडियो हो गया है ये, और यूट्यूब पे आपका अटेंशन स्पैन कितना है हमें पता है. लेकिन फिर भी what I have done is also to also give you a reality check of your own preparation, is that I have just picked a few topics or one topic each from all the four papers, है ना. So हमारे पास we have GE1, GE2, GE3 and GE4. So what I have done is तीनों से सिर्फ मैंने एक एक टॉपिक उठाया है. एंड इनफैक्ट द टॉपिक दैट आई हैव पिक्ड इज शॉर्टर देन द टॉपिक दैट यू विल एक्चुअली हैव टू प्रिपेयर इन अ 9 day साइकिल. लेकिन फिर भी चलो ठीक है. सो G1 से आई हैव पिक्ड द टॉपिक फ्रॉम माइक्रो. दिस इज द थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरीज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. I forgot to share the screen. Just 1 second. All right. So GE1, 2, 3, 4 है. GE1 से from micro I have picked out theories of income distribution. These have your four main theories. Basically the Marxian theory, Kaldor, Kalecki and Ricardo. ठीक है. तो ये चार theories हैं that come under your theories of distribution. इनके ऊपर questions काफी आते हैं. The second one is OLS regression, because the second most, the second major component of GE1 is quant, उसमें भी econometrics. So econometrics में I've picked up regression, it's easy रहेगा. From GE2 we are going to do old trade theories, and उसमें भी the Hecksher Ohlin model, right? So old trade theories, and because this is something that I plan to discuss today, given the time limitation. So I've just picked out one model, all right? GE3 say we are going to do cost benefit analysis. And from GE4, I've picked out topics that are about labor basically, so labor force and your population, basically demographic dividend, labor force, all kinds of things on that. So अभी हम ideally what we would do is in the actual cycle that will happen. Suppose we pick up a topic. Suppose आज इस वाले cycle का topic है theories of income distribution. ठीक है ना? So the session, the entire session will be dedicated to revising these theories, which means that an hour, hour and a half में हम यही कर रहे होंगे. तो आज तो हम ये नहीं कर सकते हैं. ये सारे टॉपिक्स जैसे हम उठाएंगे, हम उनको 1-1.5 घंटे लगा के रिवाइज करेंगे, उनके ऊपर पीवाईक्यूज देखेंगे, एंड देन यू विल डू द एंटायर थिंग दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ कपल ऑफ टाइम्स नाउ. सो आज की क्लास में instead of doing all of this, cannot be done right now, we are just going to pick one. So I like this one. I'll do Hecksher Ohlin model, not teach. Always remember, ये सारे वीडियोस में इस प्रोग्राम में ही मैं पढ़ाऊंगी नहीं. This model itself takes 2 to 3 lectures, not teaching, right? But I will just go over a brief revision like this. The actual revision will be more detailed than this, but आज थोड़ा ज़्यादा ही speed में होगा. Also, it will not be a revision, but just to say कि किसी भी, जैसे मान लो ये topic पढ़ रहे हो, तो इसमें कौन से aspects you should cover, right? And which angles you should think about. So we are going to do this. And then we are going to do a little bit of Indian economy also. So a lot of kids are scared of Indian economy. तो लेबर भी हम कर लेंगे, अगेन करेंगे नहीं. आई विल जस्ट टेल यू कि इंडियन इकोनॉमी जब प्रिपेयर कर रहे हो तो हाउ टू प्रिपेयर दिस. एवरी इंडियन इकोनॉमी टॉपिक इज गोइंग टू हैव थिंग्स दैट आर more or less static, and then there are going to be things जो कि काफी डायनामिक होंगी उसमें, जिसमें कि recent developments होंगे. So then how to augment your existing notes, और इसको किस तरीके से add on करते जाओगे, right, is what I'm going to briefly tell you. So let me get started with the Hecksher Ohlin model. Remember, not teaching, right? Just telling you कि Hecksher Ohlin model में क्या क्या कवर करना चाहिए. ठीक है.
Hecksher Ohlin model में what you need to cover, any model, usually that is how it will be. First thing you want to cover the context. Context बोले तो Hecksher Ohlin model आया था Ricardo model के बाद, which means that it was filling some of the gaps that the model left. Mainly two things. One की जो comparative advantage है, that was just assumed by Ricardo and everyone else before him, that there exists comparative advantage. What is the source of that comparative advantage was never explored. This is where Hecksher Ohlin came in. The second thing that they also explained or they theorized, उन्होंने बताया कि ये कैसे मूव करेगा कि ट्रेड से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं हमारे, बेसिकली लैंड, लेबर एंड कैपिटल वर दे फोकस्ड ऑन, बट एनी factor of production, how is trade going to affect the returns to these factors of production, है ना? So ये दो चीजें this model tried to explain. It did, right? And this is the context कि ये इसके पहले ये था और फिर हम यहाँ पे पहुंचे. Then second thing, any model you're going to do assumptions, and while you're doing so सारे assumptions तुम्हें पता होने चाहिए. Whenever you are doing the assumptions, कई बार याद रखना मुश्किल होता है. एक चीज that you should keep in mind is that you have to think कि theory करना क्या चाह रही है. Hecksher Ohlin model is trying to isolate the effect of different factor endowments on the trade pattern or on the export import pattern of a country, या a pair of country. So जब ये चीज isolate करनी है, सिर्फ इसका इफेक्ट देखना है, तो सारे assumptions designed ही इस तरीके से हैं कि सिर्फ ये ही डिफरेंस एग्जिस्ट करे दो कंट्रीज के बीच में, एंड एवरीथिंग एल्स इज द सेम. सो दैट इज वाई यू विल सी कि उनका जो है टेक्नोलॉजी सेम है, टेस्ट सेम है, राइट? कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं है. ये सारे assumptions they are unrealistic, but in a model we have to simplify things. The reason for that simplification is because the aim of this model is to isolate, of course, a lot of other things. So when you, if you're doing Salvatore में एक बहुत अच्छा diagram है, general equilibrium diagram है about Hecksher Ohlin model, and what all things actually affect the final price of anything, right? वो पूरे chain में जो पर्टिकुलर रूट आइडेंटिफाई करना है, वो जो हाईलाइट करना है, बस उस पे ही बात होनी चाहिए. बाकी सारी चीजों को यू हैव टू होल्ड इधर कांस्टेंट और आइडेंटिकल और व्हाटएवर वर्क्स. तो जब ये बात समझ में आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा कि assumptions क्या क्या हो सकते हैं इसमें, राइट? तो हमको कोई भी ट्रेड बैरियर्स का तामझाम नहीं चाहिए, हमको कोई मार्केट इम्परफेक्शंस का तामझाम नहीं चाहिए, हमको ये नहीं दिखना चाहिए कि दोनों कंट्रीज में टेक्नोलॉजी अलग है इस वजह से ट्रेड ड्राइव हो रहा है, या टेस्ट अलग है इस वजह से टेस्ट ड्राइव हो रहा है, ट्रेड ड्राइव हो रहा है. नहीं, मान लो सब कुछ सेम है, तब कैसे ट्रेड ड्राइव हो रहा है, तब फैक्टर अबंडेंस का जो फर्क है उससे हाउ आर वी सीइंग व्हाट वी आर सीइंग. ऑलराइट? So you have to focus on the assumptions of this model. Then you have to focus on proper definitions, right? और इसमें दो चीजें हैं जिनकी definitions बहुत important है. There is one which is factor intensity. This is something that is about commodities, about goods, and this is a comparison you do within country. And the other thing is factor abundance, which is about countries, right? And we know that, just be very clear iska definition, because this is a definition about the relative returns to those factor and not the physical amounts. ठीक है? ये सारी चीजों का डेफिनेशन पहले क्लियर करना है. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए. ऑलराइट? देन द नेक्स्ट थिंग, you have to know the exact statement of the theorem, right? एग्जैक्टली पता होना चाहिए, गोल गोल घुमा के नहीं लिखना. दो थ्योरम्स हैं इसमें, है ना? एक हेक्शर ओलिन थ्योरम है, एक फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम है. यू शुड ऑल्सो नो दैट द एफपीई इज एक्चुअली अ कोरोलरी. फर्स्ट होल्ड करेगा, assumptions होल्ड करेंगे तो वो अपने आप होल्ड करेगा. ठीक है? देन यू शुड नो द डायग्राम वेरी क्लियरली. कौन से एक्सेस पे कौन सा कंट्री है, कौन सा पीपीएफ किसका है, दोनों को सेम उसमें ग्राफ पे सेम एक्स वाई एक्सेस पे बनाना है, क्यों बनाना है, राइट? All of this should be very very clear to you. So diagram should be very clear to you and you should be able to draw the diagram free hand. वहां पे नहीं स्केल निकाल के बैठ जाना. ठीक? You should be very clear about the mechanism or the proof. हाँ,
mechanism और द प्रूफ ऑफ द थ्योरम्स, राइट, कि कब कहाँ से कैसे मूवमेंट से हम वहां तक पहुंचते हैं ना, सारा एक्सप्लेनेशन है ना सैल्वाटोर में, या तुम्हारे नोट्स में तुमने लिखा होगा दैट व्हाट हैपेंस व्हेन ट्रेड स्टार्ट्स हैपनिंग एंड देन हाउ डू वी रीच टू द आउटकम दैट वी रीच. सो दैट एंटायर चेन हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर टू यू. हर स्टेप पे तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए रादर देन अगेन तुक्काफिकेशन. ऑलराइट, देन द स्टोल्पर-सैमुएल्सन थ्योरम. नाउ you have to be also clear कि this is a corollary again of the factor price equalization theorem, है ना. तो स्टोल्पर-सैमुएल्सन थ्योरम को अलग से नहीं पढ़ना, वो इसी का पार्ट है. और अलग से कभी पूछा जाए तो देन यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये इसके तार कहाँ से जुड़े हैं, और वो अपने आंसर में लिखना होगा. इसीलिए वो क्वेश्चन भी है उसमें कि एम आई एबल टू रिलेट सिमिलर थ्योरीज, right? So जब इसका सवाल पूछा जाए and a candidate who is able to recognize its links to the Hecksher Ohlin model, that of course will get rewarded with an extra mark or something, है ना? All right. Then you should be able to aware about all the fringes of this model, right? Special cases. एक तो था specific factors model where वन ऑफ द assumptions is tweaked. पहले हम बोलते थे कि सारे फैक्टर्स सारी इंडस्ट्री में सारे एक्स और वाई के प्रोडक्शन में यूज हो सकते हैं, दे आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल. इट डजंट मैटर कि वो अभी जो है वो एक्स के प्रोडक्शन में था और अब वाई के प्रोडक्शन में चला जाए. बट a lot of times factors are specific to a particular industry. Then how does that change the result? How does that change the factor price equalization theorem के results, right? To be clear about that. Secondly, factor intensity reversal, right? ये भी पता होना चाहिए. This is where basically the model falls apart. अगर ये होने लग जाता है then the results of the model no longer hold, and you have to be very clear that when will this factor intensity reversal happen. वो elasticity of substitution का सारा डिस्कशन है ना, वो तुम्हें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल होता क्यों है. और अगर होगा तो why will the model unravel? Okay, it will not be able to make any prediction. All its prediction will not make any sense. Both the countries will want to export the same product, right? For this empirical test, a lot of times models will not have this portion, but Hecksher Ohlin model मैंने इसलिए भी choose किया because it has so much around it, right? तो वो सब चीजें cover करके चलना है. The empirical tests, so you should know about the Leontief paradox, right? And you should know कि उसका resolution क्या हुआ. Was the paradox resolved? How was it resolved? Finally, you should know कि criticism क्या है इस मॉडल के. हमेशा criticism पता होना चाहिए, लेकिन criticism पे अपनी बात खत्म ना करें. किसी के बारे में बुरा बोल के अपना आंसर ना खत्म करें, कुछ अच्छा कह दें. So you say in your conclusion that, I'm just thinking of a normal question on Hecksher Ohlin model. You should also know कि हेक्सर ओहलिन मॉडल ने कंट्रीब्यूट क्या क्या चीजें की, और उसके बाद से where did it fall short, and then आगे कौन सी थ्योरीज आई, right? So you have to know the criticism plus the theories that came later, theories that followed it, right? इस तरीके से ये पूरी कहानी राम कथा तुम्हें पता होनी चाहिए with all the side stories and all the short small stories that are in between. ठीक. सो ये हेक्सर ओहलिन मॉडल जब रिवाइज करोगे यू शुड हैव क्लैरिटी ऑन ऑल दीज पॉइंट्स. ठीक है. ऑफ कोर्स नॉट टुडे, कैन नॉट बी डन, बट इमेजिन दैट यू डेडिकेट say an hour and a half on the old trade theories to revise it. Very doable. ठीक है ना. तो वो ही हम अपने सेशंस में किया करेंगे, and then say another half an hour to discuss the PYQs. This will typically what the session, any kickoff session will look like. Now let us discuss labor. Now labor is a recurring topic, of course. Why I picked out labor is because it is very relevant right now, है ना. So the plight of the students and the unemployed has never been louder, right?
So it can be expected that you see a question on this in the next year. Although जितनी तेजी से चीजें आजकल चेंज होती हैं, तब तक क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता. But because at least right now it is very important, let us discuss. Now, of course, लेबर के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूंगी. लेट मी टेल यू कि कोई भी इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है तो उसको कैसे रिवाइज करना है और कैसे उसके नोट्स को और ऑगमेंट करना है. अभी जैसे लेबर पढ़ रहे हैं. नाउ देयर आर गोइंग टू बी थिंग्स दैट आर ऑफ कोर्स static. So what to revise? This will include your static things. What are those static things? Basic definitions. Basic definitions क्या क्या हो गए? You should know the definition of labor force. You should know the definition of labor force participation rate. ठीक है? Worker population ratio क्या होता है? Unemployment rate क्या होता है? Unemployment rate इंडिया में measure कैसे किया जाता है? Right? So you have your usual activity status. उसमें भी primary और subsidiary होता है. Then you have your current weekly status. वो किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट को पकड़ सकता है. Then you have your current daily status. वो किस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को पकड़ सकता है. You have to know the exact definitions. You have to know कि इंडिया में अभी क्या फॉलो होता है, ये PLFS वगैरह क्या फॉलो करते हैं. एंड यू हैव टू ऑल्सो नो कि हर ये जो 3 मेजर हैं उसके क्या प्रोज हैं और क्या ब्लाइंड स्पॉट्स हैं. राइट. सो इफ यू आर ट्राइंग टू कैप्चर समथिंग लाइक अंडर एम्प्लॉयमेंट, देन करंट डेली स्टेटस इज समथिंग दैट विल कैप्चर इट द बेस्ट. बिकॉज देन इट इज टॉकिंग अबाउट कि आप दिन में कितने दिन एम्प्लॉयड हो, कितने घंटे के तुम्हें useful work that you are employed in, right? So you may be just employed for an hour, and if you do not take into account CDS, current daily status, and you just look at CWS, which is current weekly status, you will be counted as employed, whereas in reality you are underemployed. है ना? तो आजकल PLFS only looks at CWS, it doesn't report CDS anymore. So you have to be aware of the blind spots of each of these measures. ठीक है ना? उसके बाद you should know कि main और marginal workers क्या होते हैं, organized unorganized sector क्या होता है, formal informal sector क्या होता है और formal informal employment क्या होता है, क्या फर्क होता है दोनों में. All right. Then after that you have to know कि employed, unemployed, underemployed and disguised unemployed, ये सब में क्या फर्क है, exactly क्या definitions है. These are all static parts, right? So all these definitions you have to know. You have to know a definition like employment elasticity, something that is very relevant and a statistic that we should be looking at very carefully. Plus a term that is a nice fancy term for people in economics. So if you're able to use these economics technical terms, adds weight gravitas to your answer. ठीक है ना? उसके बाद दूसरी चीज जो कि तुमने रिवाइज करनी है वो है ट्रेंड्स. ट्रेंड्स में देखो कि सारा ट्रेंड तो पास्ट ही है सिवाय एक लास्ट पॉइंट के. तो ट्रेंड्स तुम्हें रिवाइज करना है, how things have moved along. And for IES, you only need to focus on more recent trends. If you're preparing for optional, then of course the trends right away from independence also matter. But IES के लिए तुम recent 10 साल का 15 साल का ट्रेंड उठा लो, वो काफी रहता है. ठीक है? So trends you have to revise plus add on the most recent one. तो अभी तो ऑलरेडी हो चुका है तुम्हारे वो ऐड हो जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इस साल का बजट और सर्वे आ चुका है. बट जब अगले साल का आएगा तो वहां पे इसको एक और ऐड कर लेना. ठीक है? सो ट्रेंड्स यू शुड डू. अगेन अर्बन एंड रूरल, इस वाले पर्टिकुलर केस में अर्बन एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कैसे फर्क है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना? सो यू हैव टू डू दी कैरेक्टरिस्टिक्स as well as the differences. So how is the urban unemployment different from rural? It is more of an educated and young people who are unemployed in the urban areas compared to the rural areas. तो हर किसी के problems कैसे अलग हैं, क्यों अलग हैं? All of these things you have to have your understanding on. Cool. Another important, female labor force participation, right? Female labor force participation rate and all the aspects related to it. Cultural,
हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक एंड द करंट। तो करंट के ऊपर भी मैं आऊंगी, बट ये सारी चीजें जो कि ऑलरेडी पास्ट में है, तो ये तुमने रिवाइज करना है। यहाँ पे भी जो ट्रेंड्स है, लास्ट वाला इसमें ऐड करना है। चाइल्ड लेबर, ठीक है। Another important term, although this is an overlap with population, but demographic dividend की बात ही इस बात से आती है कि आपके जब वर्किंग एज में लोग हैं तो यू आर एबल टू रीप दैट डिविडेंड, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड इज नॉट ऑटोमेटिक. द ओनली थिंग ऑटोमेटिक इज द swell in the working age population. To turn it into a dividend requires a lot of other things to support it. So demographic dividend क्या है, where we are on that, or what is needed to capitalize on that, all of these things that you have to understand. देखो अभी तक सारा स्टैटिक ही चल रहा है, और finally you should also, so this is a static में debates on jobless growth, right? This is something that Umang Kapila also talks about, Mishra and Puri, सारी बुक्स में ये रियलिटी है हमारी। तो जॉबलेस ग्रोथ के रीजंस क्या हैं, कितना सारा, कितना जो है वो पॉलिसी फेलियर रिस्पॉन्सिबल है, कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिस्पॉन्सिबल है, या फिर अडॉप्शन ऑफ द रॉन्ग काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल है, राइट? इनइक्वालिटी कितना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑल ऑफ दीज यू शुड बी अवेयर एंड रिवाइज। हाँ, सो ये सारी चीजें, इसमें से भी सारी चीजें तो मतलब स्टैटिक ही है ना भाई। अब डायनेमिक क्या है, व्हाट टू ऐड? दीज आर योर रिसेंट पॉलिसीज प्लस डेटा पॉइंट्स। सो फॉर एनी इंडियन इकोनॉमिक टॉपिक ये सारा तुम्हारा बेस है, स्ट्रक्चर। अब तुम्हें कोई नया इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, you get new information. Suppose you get new information about policies or schemes for female labor force participation, right? Schemes for child labor, for upskilling, right? For entrepreneurship, for formalization, right? Labor codes. Finally, another important thing, given the US-India trade deal and something that the advanced countries keep on, forcing upon labor abundant countries like India, are the international labor laws, right? ये सारी चीजों में जो डेवलपमेंट, यू कैन सी दैट वेरी क्लीनली दे फिट इन ईदर वन और मोर ऑफ दीज स्टैटिक टॉपिक्स। तो तुम्हारा जब स्टैटिक बेस रेडी होगा, यू आर जस्ट गोइंग टू सी अ डेवलपमेंट ओवर हियर एंड ऐड इट ओवर देयर। हाँ, सी अ डेवलपमेंट ओवर हियर, ऐड इट ओवर देयर। पीएलआई के ऊपर क्या नाम है, पीएलआई के ऊपर क्वेश्चन है, वी जस्ट सी, add it add it to the jobless growth scenario, right? कि वो, it is a production linked incentive scheme, it is not an employment linked incentive scheme, and something that the economy as a whole has been failing at delivering is increase in employment commensurate with increase in output or profits or GDP, right? This is the point that goes there. So this is how you revise and augment Indian eco topics. बेस वही रहेगा, इन्हीं सब मुद्दों पे तो बातें होंगी ना, कोई नया मुद्दा तो आएगा नहीं। अभी फिर एआई बेस्ड मुद्दा आएगा यहाँ पर, है ना? सो एआई रिलेटेड थिंग्स की, एआई के आने से कैसे, अब एआई का भी बबल बर्स्ट होता हुआ दिख रहा है, हाउ इज दैट गोइंग टू अफेक्ट AI के basis पे a lot of the export, the service export that we are doing, that is going to be affected, right? So your notes will have a base and whatever current comes will get added to that base. ये current को अलग से मत बनाना, इस current debate को इन्हीं जगह पे fit करना है, all right? Okay, so I think that is enough revision. Time is also running out. Now let us discuss the PYQs briefly and then we will stop here today. Fill the form, send
fill the form. We will send you the practice questions, the test questions, and you start your work. We will start our work. Okay? So let's just look at the PYQs briefly, and give me a second. I'll share the screen. All right. So these over here are questions. Which are, so all of this has already been segregated, or you will also find these on our website as free resources. So I'm just going to cover international and labor today, और बाकी माइक्रो के और उसके क्वेश्चंस मैं बहुत ही ब्रीफली कवर करूंगी, ठीक है ना. सो इंटरनेशनल में वी फोकस्ड ऑन हेक्शर ओलिन मॉडल. लेट्स सी दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड based on that model. So this is 2025. State and explain the Stolper-Samuelson theorem. What are its implications on a labor abundant economy? 20 नंबर का क्वेश्चन है. You have to explain the entire theorem and then you have to also explain कि उसका पूरा proof तुम्हें समझाना है. Then you will also link it to the Hecksher Ohlin model, right? और उसके बाद the second part of the question की implication on a labor abundant economy. वहां पे भी रुकना नहीं है. कौन है labor abundant economy? हम. तो इंडिया के लिए कैसे रेलेवेंट है वो भी बात करनी है. रिमेंबर पीवाईक्यू के सिर्फ हम पैटर्न देख रहे हैं, डिस्कशन हम अगले सेशन में करेंगे. देन अनदर क्वेश्चन, state and explain the Heckscher-Ohlin theory, comment on its applicability in the presence of factor intensity reversal. अगर तुमने वो पूरा थ्योरी अच्छे से रिवाइज किया है on all those points, easy peasy direct question. ठीक. Then let's see. State and explain the Heckscher-Ohlin theorem and factor price equalization theorem. दोनों उसी के दो parts हैं. Explain how the prevalence of factor intensity reversal would result in the rejection of both theorems. फिर से उतना ही सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अलग भी नहीं है इसमें. All right. Show that Stolper-Samuelson theorem follows Heckscher-Ohlin theorem of international trade. पूछ ही लिया, अब इसको बताना है. You will say that वो फर्स्ट थ्योरम होल्ड किया तो फैक्टर ऑफ प्राइस इक्वलाइजेशन होल्ड करेगा, और वो होल्ड किया तो दिस इज नेसेसरली द सेम थिंग, राइट? सो think about, you know everything now. Think about how you'll write the answer. Elucidate Heckscher-Ohlin theory of international trade, highlight some of the shortcomings of this theory. ठीक है, वो ही सारे पॉइंट्स अलग अलग चीजों पे पूछे जा रहे हैं, कभी ये कभी वो. This is 2017. This is the last one that I'll go. State and prove the Stolper-Samuelson theorem. What is the magnification effect? ठीक है. All right. Examine the international trade, effect of international trade on the differences in factor prices between nations, effect of international trade on relative factor prices of and income within each nation. ये क्या है? ये Heckscher-Ohlin मॉडल का रिजल्ट है. ठीक है. So you have to just be very clear. If you know the theory तो ये हो जाएगा. Now you can see that Heckscher-Ohlin मॉडल एक कितना लो हैंगिंग फ्रूट है. जिसके के वो ही क्वेश्चंस घूम फिर के आते हैं, वो ही क्वेश्चंस आ रहे हैं. ये 2015 तक है. हाँ, 2026 वाला अभी आई एम सॉरी पुट इट ऑन हियर. 2015 में नहीं आया है तो डेफिनेटली 26 में तो है ये क्वेश्चन. द आइडिया इज दैट लुक एट हाउ predictable the question is. So if you spend your time, write an untimed answer on Heckscher-Ohlin model. ये सारे questions हो नहीं जाएंगे बड़े आराम से. वहीं पहुंचना है. बहुत पढ़ लिया, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, फटाफट रिवाइज करो और लिखना चालू करो. ठीक है. Let us now get to the questions on labor. Let's see what kind of questions are asked. All right, this is your labor. Let us look at the kind of questions. ये तो मैंने segregate किया, तो सारे labor वाले ही questions हैं. Write down the policy measures undertaken recently to improve female labor force participation. तुम्हें पता है क्या होता है, तुम उस बारे में लिखोगे और फिर policy measures बताने लग जाओगे.
What is PLI? Critically examine the role towards employment generation. Critically पूछा गया है, which means that they want you to tell कि भाई क्या shortcomings है इसके, as an employment generation program, rather than क्योंकि ये production linked है. So you should be able to again think about कि हम एक labor abundant country हैं और हमारे यहाँ if we adopt technology that is going to replace labor, then that is going to be a problem. राइट. सो ये सारे टर्म्स तुम्हारे आंसर में होने चाहिए. कीवर्ड रिकग्निशन, दैट इज वेर यू विल स्टार्ट. एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड. है वही सेम चीज है देखो. एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सो यू विल अगेन टॉक अबाउट के जो भी यूथ है या जो भी लोग एजुकेशन से निकल के बाहर जा रहे हैं, दे आर नॉट इंडस्ट्री रेडी. सो द गवर्नमेंट हैज डन दिस. जो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, it is at a crucial juncture. We have a growing working age population, but we need to tap into it. We need to convert it into a dividend quickly, and this is basically uh, an initiative by the government in that direction. ठीक है. Discuss the extent to which NREGA has been successful in combating the problem of rural unemployment, and you suggest measures to make it more effective. Right over here, you have to recognize that NREGA का impact है rural employment generation पे, but NREGA is not about employment. NREGA is mainly about poverty management. Right, so this is what you're going to talk about it in critically over here कि हाँ उसका impact है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सबसे मेन चीज जो रिकॉग्नाइज करनी जरूरी है कि नरेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ज्यादा या एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट ज्यादा पॉवर्टी मैनेजमेंट का स्कीम है, और इसीलिए उसका इम्पैक्ट भी एम्प्लॉयमेंट पे लिमिटेड ही हो सकता है. बट ऑफ कोर्स इट डज हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट यू विल डिस्कस. ऑलराइट. गिवन अकाउंट ऑफ रीसेंट लेबर मार्केट रिफॉर्म्स इन इंडिया. अगेन जो मैंने पॉइंट्स बताया उसमें तो ये आना ही चाहिए कि जो भी रिफॉर्म्स हैं या जो भी लेबर कोड्स जो न्यू डिफाइन हुए हैं वो सब क्या चीजें यहाँ पर ऐड होंगी. जो भी न्यूज में पढ़ते जाओ अपने बेस पे ऐड करते जाओ, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, बेस होना चाहिए. ठीक है. सो इंडियन इको टॉपिक्स के बेस तुम्हारे पास जो भी है उसके ऊपर बस ऐड करना है. क्रिटिकली इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑन लेबर मार्केट. राइट. अगेन इस टाइम पे करोगे तो एआई के बारे में और भी बात करोगे. Identify the socio-economic and cultural factors led to the existence and persistence of child labor in India. पिछले तुम्हारे नोट्स में है. Recent initiatives कुछ हैं तो उसको डाल दो उधर. Globalization has made international labor standards more relevant today. ये 2023 का सवाल है. It is even more relevant in 2026. ठीक है. India has a worse underemployment problem than unemployment. एंड देन यू विल ऑल्सो स्पेसिफाई कि अभी जो हमारा मेजरमेंट तरीका है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट को कैप्चर नहीं कर पा रहा है ठीक से. CDS रिपोर्ट नहीं हो रहा है जो कि सही तरीके से अंडर एम्प्लॉयमेंट कैप्चर करता है. CWS एक्चुअली काउंट्स यू एज एम्प्लॉयड इवन इफ यू हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर 1 डे इन अ वीक. और कितने टाइम के लिए, एक दिन एम्प्लॉयड हो तुम, मान लो 2 घंटे के लिए, तो तुम एम्प्लॉयड नहीं हो, तुम अंडर एम्प्लॉयड हो, तुम अनएम्प्लॉयड भी नहीं हो. बट देन वी आर not able to capture that, right? So apart from the things that you will talk about over here, that underemployment का problem क्या है, कितना extent है और क्यों है, you will also say that we are also not measuring the extent of underemployment properly. And mention यहाँ पे कि क्या कर रही है सरकार हमेशा. End on a positive note. I know this sounds sometimes very difficult to do, but we have to. देखो जिस पोजीशन के लिए जा रहे हो अभी भी, you are going as a problem solver, not as someone who tells you all the problems. Of course you have to know all the problems, but you have to also recognize कि उसके solution के लिए क्या क्या काम हो रहा है, और वो तुम्हें लिखना आना चाहिए. अल्टीमेटली सरकारी नौकरी है, इस बात को समझो. ठीक. 2021 में do you agree that child labor in India is socio-economic problem, right? डिलिनेट, इसमें देखो कुछ भी करंट नहीं है, करंट ऐड करना है अपने आंसर में, लेकिन इस क्वेश्चन का मोस्ट ऑफ द पार्ट यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. डिलिनेट द मेजर चेंजेस इन एलिमिनेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ रेट्रोग्रेस इन द इंडियन इकोनॉमी इन रीसेंट टाइम्स. है ना.
फिर से वो जॉबलेस ग्रोथ वाली बात, मेक ब्रीफ पॉलिसी सजेशंस टू मीट देम. सो ग्रोथ रेट्रोग्रेस के बारे में जब बात करोगे, एटलीस्ट इन द करंट टाइम्स, दिस इज 2021, बट इन द करंट टाइम्स यू आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द things that are beyond our control, specifically the global situation that is very very vulnerable and volatile right now. And then you will also suggest कि उसके basis पे हमको किस तरीके से we have to modify our energy basket from where we source our energy. एक वो चीज हो गया, एक तुम उस पे फिर से, so this is a 15 marker, right? So कम से कम 3 पेज तो लिखना है इसमें. तो वो क्या करोगे, फॉरेन एक्सचेंज वाला क्या चीज है, सॉरी हाँ ये क्या, हाँ ये 15 मार्कर, हाँ. सो वो क्या करोगे, फिर ग्रोथ रेट्रोग्रेस होने के और क्या रीजंस हैं, along with that अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के क्या रीजंस हैं, ऑल ऑफ दिस. अगेन एंड करोगे पॉजिटिव नोट पे, क्योंकि this is a tumultuous time, so the entire world economy is also seeing a retrogress, and India is a major economy. Still हमारा performance काफी हद तक बढ़िया है. We have strong macroeconomic fundamentals. This is how you will end and of course give policy suggestions. ठीक है. सो मैं बहुत ब्रीफली बोल रही हूँ, ये टाइम नहीं है डिस्कस करने का, लेकिन जस्ट लुक एट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस. Remember your base. There is nothing in that base that doesn't get covered over here. Right? How has the situation in India's informal sector workers changed in the recent times? Suggest policy interventions for improving socio-economic. So, यहाँ पे तो तुम अपना गिग वर्कर्स वाला जो recent developments हुए हैं वो डालोगे, ये तो फिर 21 की है, बट हम we can also write this answer sitting on 2026, right? So whatever recent has happened, labor reforms, new labor codes, और जो various including the central government और जो भी proposals हैं about the gig workers and everything, all of that has to go here. But the base, remember the base. Current affairs वाला add करना. All right. Okay. All right. So I have taken a lot of your time, and this is where we stop for today. This was again day 1 of our 5-day demo that we are going to have till the Saturday, 1st of August. 1st of August is also when we are going to enroll. Today we stop here. Fill the evaluation form. If you are filling the evaluation form after today, तो आपको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन और टेस्ट क्वेश्चंस एक साथ भेज देंगे. वी विल कीप द इवैल्यूएशंस ओपन, जो कि तुम जब टेस्ट क्वेश्चन सबमिट करोगे तो हम उसको इवैल्यूएट करेंगे टिल अ कपल ऑफ वीक्स इनटू अगस्त. आफ्टर दैट we will still send you the practice questions and the test questions, but we will not evaluate. Uske baad se we will have to shift focus to the enrolled students. But after 2 days, we will also send you the model answers. So at least ये topics के model answers we will send you, and we will send you the practice questions and the test question. If you fill up the form before 2 weeks into August, then this entire thing will be done. कोशिश करो कि अभी के अभी साथ साथ में करो. If you find out about this, I will also be circulating a lot of posters and everything. So if you find out about this, this is the best time, because once we start, we will not be able to redo any of the topics that have already been done. The schedule is very tight given the breadth of the syllabus. So if you join late, we will not be able to redo things. You will have access to the model answers, but test evaluation and everything will then start from when you have enrolled. All right. So I hope to see a lot of you in the sessions, and a lot of you submitting your answers. Please start writing. Please come over the fear of writing. वहीं से ये exam clear. ठीक है? Now I will see you on day 4 with a discussion of PIQs as well as the test questions. And all the best till then. Get started. I'll see you guys later. Bye bye.